Hello dear students, welcome back to the chemistry class. In today's class, I am going to teach you about the law of chemical combination. Different laws of chemical combinations के बारे में study करेंगे, okay? Because in the previous class we have completed up to the dimensional analysis. Scientific notation, significant figure, dimensional analysis. With numerical problems we have completed. Now we will move to the next concept, that is laws of chemical combinations. Next heading, laws of chemical combination. Laws of chemical combinations. So in this part, in the 17th century, the chemists are trying to convert the matter from one form to another form. During their qualitative and quantitative studies, they made some generalization. Those generalizations were nowadays we can call as laws of chemical combination. The quantitative generalizations, what they have reported, those are known as laws of chemical combination. Here we are going to study about 5 laws. The first one, law of conservation of mass. Here we are going to discuss about the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. This is first one. Law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal relation and the law of combining the volume. 5 laws के बारे में स्टडी करें. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या है? The law of conservation of mass. Conservation of mass. So this law deals with the relationship between mass of reactant and products in any physical or chemical changes. Masses of reactant and masses of product के बीच में relation explain कर रहे हैं यहाँ पर. And this law, it was given by the father of chemistry, Antony Lavoisier. So this law is given by Antony Lavoisier. Antony Lavoisier in around 1789. So this law is put forwarded by Antony Lavoisier. And this law states that, as the name itself indicating, conservation of mass. तो देखिए 5 laws में उसका statement देखिए, उसका concept क्या है देखिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको numericals रहते हैं. The first one is law of conservation of mass. In this case, the statement state the law of conservation of mass. Here, the statement or simply it states that. इसका statement लिखिए. Law statement. It states that the law of conservation of mass states that. क्या है ये statement? कौन से भी एक physical change or chemical change you can consider. During a physical or chemical change, the total mass of reactant and total mass of product is the total mass of product. This total mass of product is equals to the mass of reactants. This is its statement. इसका statement क्या है? During a chemical or physical change, during any physical or a chemical change, during any physical or chemical change, the masses of the total mass of products is equals to total masses of reactant. Simple है. कौन से भी physical change or chemical change if you are going to consider, in that case mass of reactant is equals to mass of product. This is the law of conservation of mass. This law is also known by
law of indestructibility of matter. This is also known as law of conservation of mass, or we can say law of indestructibility of matter. It states that during any physical or chemical change, the masses of reactant is equals to masses of product. In other wordings, we can say matter can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change. Alternative statement आपको ये बहुत easy है, स्टडी क्या है? Matter can neither be created nor destroyed. Matter can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change. Any physical or chemical change. ये आपका स्टेटमेंट हो फर्स्ट लॉ का. एंड इसके ऊपर देखिए इन सिंपल वे. फॉर एग्जांपल, if A and B reacting together, A plus B, which gives us to the product C plus D. Here, suppose if we are considering A grams of A, which react with B grams of B, C grams and D grams of the products. We have stoichiometry that indicates the masses. According to this law of indestructibility of matter, we can write mathematically, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट? लेफ्ट साइड में जो है ये रिएक्टेंट्स है, और जो राइट साइड में है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, करेक्ट ना? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स का टोटल मास क्या है? ये प्लस बी. द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. So A plus B is equals to C plus D. इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं. A plus B. Stoichiometry A, B, C, D की जगह you can take X, Y, Z, W or any values. A, B, C, D, K, L, M, N, etc. You can take any stoichiometric coefficient. Simple concept इतना है, जितना reactant है उतना product आपको मिलेगा. Mass, matter can neither be created nor be destroyed. ये आपका statement हो, फर्स्ट लॉ का statement. Clear? इसके ऊपर आपको एग्जांपल मिलेगा. एंड in the next session we will discuss about the problems on these laws. In today's session we will discuss about all the statements of laws of chemical combination. This is the first one. Law of indestructibility of matter. Matter can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. ये first law का statement हो. Now let us move to the second law. Second law कौन सा है? Law of constant proportion. Constant, or we can call definite proportion. Law of constant or law of definite proportion. Definite proportion, ये देखिए constant है, definite है, कौन सा भी टर्म यूज कर सकते हैं? Law of constant proportion or definite proportion. What it indicates? एक एग्जांपल देखिए. What is the formula of water? Formula of water क्या है? H2O, करेक्ट ना? ओके, हमारा स्टेट में H2O है. बाजू स्टेट में क्या है? वाटर का फॉर्मूला कुछ अलग है क्या? नहीं, वाटर का फॉर्मूला अगेन H2O. हमारे देश में वही है, विदेश में भी वही होगा. फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O ही होगा. तो फॉर्मूला ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. So here this calcium carbonate CaCO3, calcium carbonate. By any means, if you are going to take the calcium carbonate, कौन से भी calcium carbonate लीजिए. Calcium carbonate बोले तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन सा है? एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन. वाटर, कौन से भी वाटर, well water, tap water, rain water, you can take any water. Its formula is H2O. So water it consists of, यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट्स आते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल.
due to respiration, due to decomposition of calcium carbonate, by any chemical method if carbon dioxide is generated. In that case, it also consists of a carbon and what? Other is oxygen. तो यहां पर देखिए कौन सा भी एक गिवन केमिकल कंपाउंड अगर हम कंसिडर किया तो उसके अंदर सेम एलिमेंट्स रहते हैं. इज इट राइट? A given chemical compound always contains same elements, isn't it? A given chemical compound है, कैल्शियम कार्बोनेट है. कौन से भी कैल्शियम कार्बोनेट आप लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट कंपल्सरी इट्स फॉर्मूला इज CaCO3 and which consists of calcium, carbon and oxygen. Same elements ही रहते हैं. And these elements are definitely combined together in a definite ratio. Constant proportion by its weight, isn't it? देखिए यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट वाटर बाय सोर्स कौन से रहने दीजिए. हमने एक केमिकल कंपाउंड जब बोल दिया तो गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स. रेन वाटर, टैप वाटर, वेल वाटर, कौन से भी वाटर के लिए तो फॉर्मूला तो वही है. वाटर बोले तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 into 2 grams of hydrogen and 16 grams of oxygen is present in water. We can say 1:8 ratio. Hydrogen and oxygen combines in 1:8 ratio in any water because water formula is 2. कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 10 to 48. So this is the ratio 40:12:8. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास कितना है? कार्बन 12, ऑक्सीजन मास 2 ऑक्सीजन है 16 into 2 32 है. 32 4 3 4 8 carbon and oxygens are present in the ratio of 3:8. So this is its statement. मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, अब स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं. And this law of constant proportion is proposed by Joseph Proust in 1799. This law is proposed by Joseph Proust in 1799 and this law states that, statement लिखिए यहां पर. स्टेटमेंट क्या है? A given chemical compound always contains same elements which combines together in a definite proportion by its mass. क्या है statements? Note down the statement. A given chemical compound, कौन से भी chemical compound लीजिए, a given chemical compound always containing same elements which combines together in definite proportion by its mass. Okay, statements? A given chemical compound always containing same elements which combine together in a definite proportion by its mass. By its mass is very important. Last में वो compulsory लिखना पड़ेगा आपको. By its mass or by its weight. ये हुआ आपका second law. First law is conservation of mass. It is also known as law of indestructibility of matter. इसका statement mathematical statement में हो गया. And the second one is law of constant or definite proportion. इसका statement हो गया. Now come to the third law. Okay, correct? We have completed the second law. Now we'll move to the third law, the law of multiple proportion. Multiple proportion, a constant proportion के बारे में तो आपको clear हुआ होगा. Now let's move to the next law, that is the law of multiple proportion. Look at the statement. So this law states that its statement देखिए मल्टीपल प्रोपोर्शन है यहां पर. तो यहां पर क्या है? If two different elements which combines with each other to give one product, एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि यहां पर more than one product अगर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो two elements combines together to form more than one product. In that case, the mass of one element which combining with a fixed mass of other element. यहां पर masses of one element which combining with a fixed mass of other element are in the simple whole number ratio. स्टेटमेंट सिंपल है लेकिन एक एग्जांपल देखिए आपको समझ में आ जाएगा. So here
Let us consider an example. When hydrogen gas combines with oxygen gas, H2 plus O2 gives rise to H2O. Balancing के लिए एक ऑक्सीजन बोले तो हाफ H, करेक्ट है? इस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ वाटर. दूसरा और एक again same hydrogen and oxygen combines which make you the product H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दे सकते हैं यहाँ पर. तो अब यहाँ पर देखिए in water how many hydrogens are there? 2 hydrogen. That means 2 grams of hydrogen is reacting. How much? 2 grams of hydrogen is reacting. ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन. तो उसका मास कितना हुआ? 16 का. Now in the second product H2O2 में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम्स. ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन से 32 ग्राम्स. तो ये दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का मास देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन इज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ऑक्सीजन का मास क्या है? वेरी है. ऑक्सीजन मास यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32 है. इसका रेशियो क्या हुआ यहाँ पर? 16:32, दैट इज 1:2 रेशियो में है यहाँ पर, करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट हुआ. रिपीट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? When two different elements, hydrogen and oxygen, two different elements. When two different elements combines together to form more than one product, दो element combined हो रहे हैं which forms more than one product, then the masses, देखिए masses different है यहाँ पर, masses of one element which going to combines with a fixed mass of other element. एक एलिमेंट का मास फिक्स रखा हूं मैं यहाँ पर, और दूसरा एलिमेंट का मासेस जो चेंज हो रहे हैं, इसका जो रेशियो है, दिस रेशियो इज इन सिंपल होल नंबर रेशियो बोल रहे हैं. ये हुआ आपका स्टेटमेंट. नोट डाउन द स्टेटमेंट. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट व्हेन two different elements combines together to form more than one product, then masses of one element, the ratio of masses of one element which going to combine with a fixed mass of other element are in the simple whole number ratio. Simple whole number ratio. Please note this one. And this law of multiple proportion, it was given by Dalton. This was given by Dalton in 1803. Statement हुआ आपका. Note कीजिए statement. When two elements combines with each other to form more than one product, then the ratio of masses of one element which combine with a fixed mass of other element are in the simple whole number ratio. तो ये आपका स्टेटमेंट होता है. और एक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइंड हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ तो N2O आ सकते हैं आपको. N2O2 नाइट्रोजन का देखिए मास N2 फिक्स रखा है मैं यहाँ पर N2 O2 O3 O4 O5. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास वेरिएबल है, तो ऑक्सीजन का मास इन दिस केस 16 है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर कितना है 64 है, और यहाँ पर 80 है. दैट इज 1:2:3:4:5. The ratios of masses of one element which combining with a fixed mass of other element are in the simple whole number ratio. ये हुआ आपका law of multiple proportion and this law is given by Dalton in 1803. हो गया आपका ये. Now let's move to the next concept, that is law of reciprocal relation. The law of reciprocal relation. The law of reciprocal relation. ये भी स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉन्सेप्ट आप देखे तो एग्जांपल देखे तो सॉल्व हो जाएगा. The law of reciprocal relation. The law of reciprocal relation. This law is given by Richard
in 1792, sir, Richard. The law of reciprocal relation. The law of reciprocal relation. तो ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या स्टडी किया था हमने? स्टेटमेंट क्या है डेफिनेट प्रोपोर्शन का? गिवन केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग सेम एलिमेंट व्हिच कंबाइंस टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो. मल्टीपल प्रोपोर्शन में two different elements are there which combines with each other to form more than one product. In that, the ratios of masses of one element which combining with the other elements are in the simple whole number ratio. लेकिन यहाँ पर क्या है? Three elements consider कर रहे हैं. For example, B, C. Three different elements I have taken. Right? If two elements B and C, A, B, C are the three elements. When element B is reacting with A, this A, इसका mass मैं fixed रखूंगा यहाँ पर, fixed mass. When two elements which combines with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so is the simple or some simple multiples of the ratio in which they are going to combine with each other. Look at this. When B is reacting with A and C is also reacting with A independently, when two different elements which combining with a fixed mass of other elements, then they do so in such a way that the ratios in which they combining with the fixed element, ये जो रेशियो है इसका, देखिए फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल कंसीडर करेंगे. एक हाइड्रोजन यहां पर कंसीडर किया मैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर, अरे तो सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों सेम है, कहां पे कंसीडर करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आपको. थ्री एलिमेंट्स है. व्हेन सल्फर एंड हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली रिएक्ट हुआ तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? H2S. तो ये प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम्स. एक सल्फर का मास कितना है? 32. नेक्स्ट, अब दूसरा देखिए यहां पर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड हुआ तो प्रोडक्ट इज वाटर. वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है? अगेन 2 ग्राम. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम. लुक एट दिस, हाइड्रोजन का मास मैंने फिक्स रखा. ठीक है. When two different elements combines with a fixed mass of third element, then they do so in such a way that ये कैसा रिएक्ट होते हैं? The ratios in which they combining with the third element. कौन सा रेशियो है? देखिए यहां पर 13 ग्राम, यहाँ पर सॉरी 32 grams of sulfur is combining. In this case 16 gram of sulfur is combining. ये जो रेशियो है, this ratio is same or some simple multiple of the ratio in which they combines with each other. अगर ये दोनों सेल्फ कंबाइंड हो तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो सकते हैं, नहीं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो सकते हैं. अगर सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो तो 32:32 रेशियो, नहीं तो 32:48 रेशियो. दैट इज 1:1 रेशियो, नहीं तो 2:3 रेशियो. 2:3 रेशियो आ जाएगा आपको. तो यहां पर रेशियो क्या है? 2:1 है. 2:1, 1:2, 2:3. ये रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियोज में ही रहते हैं. सिंपल होल नंबर रेशियोज. तो ये हुआ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन. वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग. द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, इट स्टेट्स दैट the law of reciprocal relation is given by Richard in 1792, and it states that when two different elements which combines with a fixed mass of third element independently or separately, then they do so are the ratios in which they combine with the third element. इसका जो ratio, the ratios in which they combine with the third element is same or some simple whole number multiple of the ratios in which they combines with each other. ये आपका स्टेटमेंट हुआ. The law of reciprocal relation. The law of reciprocal relation. This is the fourth law. और एक law है the law of combining the volume. The last one, the law of combining the volumes. Note the next law. Gay-Lussac law, the law of combining the volume. Next one is Gay-Lussac law. Law of combining the
volume. The law of combining the volume. The law of combining the volume. This law is proposed by Gay-Lussac and it states that law of combining volume पर तो यहाँ पर reactant and product both are in the gaseous state. For example, if H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl, what is the stoichiometry? यहाँ पर 1 mole of hydrogen, 1 mole of chlorine, 2 moles of HCl. Volume में consider किया तो 1 volume combined with 1 volume hydrogen combining with 1 volume of chlorine which gives us 2 volume of product. तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर ही आपको at constant conditions of temperature and pressure and temperature अगर constant है, in that case the gases which reacts together are produced in a product. The gases which combines or which reacts together are produced in a product in any chemical reactions. They do so in such that कैसे react होते हैं? They bear a simple whole number ratios with each other. इसका ratios देखिए क्या है? 1:1 ratio में combined हो रहे हैं. They do so in a simple whole number ratios with each other. As well as with the product also the ratio is very simple. यहाँ पर product का अगर consider किया तो 1:1:2 ratio में reactant and products are present in 1:1:2. तो ये आपका statement है. Is it clear? What is the statement? When the gases reacts together are produced in a product, they do so in such that they bear simple whole number ratios with each other as well as with the product if it is in gaseous state. Condition क्या है? At the condition of constant temperature and pressure. तो ये आपका statements हो. First law is, now we have covered 5 laws. Law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, next law of reciprocal relation and Gay-Lussac's law.